massive political war has erupted over Tajinder Bagga's arrest by Punjab police on Friday after Delhi cops escorted Bagga back from Kurukshetra. The BJP leader was produced at a Metropolitan Magistrate's Gurgaon residence around midnight. He was subsequently released and was allowed to return to the national capital. The dramatic developments have drawn in the police of 3 states and led to a BJP-AAP slugfest. Bagga, along with other BJP workers, is in fact expected to hold a protest at 3 p.m. We hear that Manjinder Sirsa, in fact, will be leading that protest. Chief Minister Arvind Kejriwal's residence will in fact be the venue of that protest by the Delhi BJP. The BJP accused Punjab police of abducting its leader, who has been vocal in his criticism of Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party rejected that charge and said Delhi BJP leader Tajinder Bagga was arrested for allegedly stoking communal tensions in Punjab. Delhi police has also registered a case of kidnapping based on a complaint by Bagga's father Preetpal Singh. Meanwhile, Punjab BJP leader Manjinder Singh Sirsa has levelled some serious allegations against the DSP who arrested Bagga. Sirsa claimed that the DSP holds close drug links and changes his name repeatedly in order to hide his alleged links with the drug mafia in Punjab. तजिंदर पाल बग्गा जी, आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, इसमें जो लीगली है उसके लिए मैं अपने वकीलों से बात करूंगा और जो हमारी राजनीतिक लड़ाई है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो भी हमारी लड़ाई होगी वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि एफआईआर करके हमें डरा सकते हैं, गिरफ्तारियां करके हमें डरा सकते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं आप एक नहीं 100 एफआईआर करिए। हम जिस ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, रात को 1 बजे क्योंकि मैं भी आपके सामने आया था तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व है उससे बात होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस लड़ाई को यहाँ नहीं रोकेंगे, अब और भी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल जो भी कर सकते हैं कर ले, उनको मैं चुनौती देता हूँ। अरविंद केजरीवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप था कि आप उनके घर पे जाकर तोड़फोड़ की थी और साथ ही साथ उन पर जानलेवा हमला किया था, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक आपको वो एफआईआर पढ़ने की आवश्यकता है। उस एफआईआर में ये लिखा है, जो मेरे एक टीवी चैनल पर ही बयान था, कि अगर अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते तो युवा मोर्चा उनको जीने नहीं देगा और तब तक प्रदर्शन करेगा। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है, जब वो मार देने के बाद थोड़ी प्रदर्शन करेगा। तो ये एक आम बातचीत की भाषा। अगर हम किसी को कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो ये थोड़ी असली में डूब के मरने को कहते हैं। तो निश्चित रूप से एक आम बातचीत की भाषा है कि तब तक आपको जीने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। तो उसका आगे का पीछे का काट लिया गया और ये दिखाया गया कि देखिए जान से मारने की धमकी दी है। जो डीएसपी कल तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए आया, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम का जुम्मा सौंपा, आप जानते वो कौन है? वो डीएसपी है जिसका देश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर के साथ नाता है। और आजकल ये जो कुलजिंदर सिंह आया था, इसका नाम कुलजिंदर सिंह है, लेकिन ये सब कुछ जब एक्सपोज हो गया कि इसका ड्रग नेक्सस के साथ इतना बड़ा नाता है और आतंकियों के साथ, तो आजकल इसने अपना नाम बदलकर KS संधू रख लिया। KS संधू। अरविंद केजरीवाल जी से पूछें क्यों 10 तस्करों के साथ उनका वास्ता है, क्यों जो लोग RDX लाना चाहते थे उनके साथ वास्ता है, और मैं गलत हूं, तुम मेरे को आज टीवी पे आके जवाब दो, मेरे पास कार्रवाई करो अगर मैं गलत हूं। मैं सच बोल रहा हूं। जिस राज्य की पुलिस को राजनीतिक कारणों से उपयोग करना पड़े और पुलिस ही कानून तोड़ने का काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि अराजकता का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है, और जहां पुलिस पावर मिली नहीं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बगैर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उठाकर ले जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। कोई दरवरतों नहीं हो रही, कानून अपना काम कर रहा है, कानून ਨੂੰ अपना काम करन ਦਿਓ और किसी ने भी कानून के काम ਵਿੱਚ अड़चन नहीं पाउण देनी चाहिए। हमारे साथ हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के वकील संकेत गुप्ता। क्या कुछ हुआ, कब प्रोड्यूस किए गए बग्गा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने? अभी प्रोड्यूस किए गए थे, थोड़ी देर पहले बग्गा साहब को प्रोड्यूस किया गया। बग्गा साहब की MLC परस्यू की गई। MLC में पाया गया कि इंसिडेंट के दौरान बग्गा साहब ने जैसे बताया
उनके बैक और उनकी कमर पर चोट आई है, उनकी कमर और उनके कंधे पर चोट आई है। और बग्गा साहब ने यह भी कहा कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करे जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शंस दी गई कि नेसेसरी अरेंजमेंट किए जाएं उनकी सुरक्षा के, और बग्गा साहब मंडे को अपने बयान कंसर्न कोर्ट में दर्ज करेंगे। बहुत डिले हुआ, ये बात भी कही जा रही है कि 2 बार एमएलसी कराया गया, क्या तथ्य है इस पूरे प्रक्रिया का? देखिए, जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, वहां से लाने में जो टाइम लगा, उसके बाद एमएलसी में जो भी, देखो एमएलसी इज ए वर्क ऑफ डॉक्टर, जो काम है वो डॉक्टर ने करना है, मेडिको लीगल केस है, डॉक्टर ने जो भी उसके अंदर एमएलसी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करके वहां पर भेज दिया, एंड इट वाज टाइमली डन। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी देर हुई है, लेकिन जो भी हो सकता था बिल्कुल अकॉर्डिंग के आया है। एमएलसी में उनके कंधे और उनकी बैक पर चोट पाई गई है। Politics heats up over Rahul Gandhi's Telangana visit. BJP IT cell head Amit Malviya tweeted a purported video of Congress Member of Parliament Rahul Gandhi in which he can be heard asking his party workers about what is the theme and what exactly should he talk about during a rally in Telangana. Now, in the video, Rahul Gandhi can be clearly heard asking, theme kya hai, bolna kya hai. Amit Malviya, in a scathing attack, draws parallel to Rahul's nightclub video from Nepal that surfaced a few days ago and said that this is what happens when one does politics in between personal foreign trips and night clubbing. Rahul Gandhi is on a 2-day visit to poll-bound Telangana, where he addressed a massive public meeting in Warangal yesterday. So what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। तो what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। तो what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। तो what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। The video, perhaps shot and leaked by a Congress leader who's disillusioned by the lack of connect, lack of commitment, and lack of seriousness of Rahul Gandhi towards the people of Telangana, towards their issues, and towards his own party in Telangana, where he's seen asking his party leaders just before a rally, what is the theme of the rally, as if it is a theme of a birthday party that he's going to attend. This also means that all the commitments made by the Congress party in its rally, particularly by Rahul Gandhi, have no meaning. They are empty words, they are hollow rhetoric. The video of Rahul Gandhi at the airport exposes that Rahul Gandhi had no clue about what he had to speak at the Warangal meeting, which explains that Congress party, which was claiming of Warangal declaration for the farmers, which is absolutely farce and bogus. There is no declaration because Rahul Gandhi himself has no clue about what he has to address, and that is why at the airport he has asked the local leaders what he had to speak and what was the theme about. He did not even know whom he was addressing. Let's listen in to other political reactions that have also been coming in. Always emerge, and when the Prime Minister stepped out and asked the media and he couldn't speak coherently, this kind of a video also came. So ultimately the point is that videos will come and videos will go, but onlookers will know what the truth behind the video is and what essentially has happened. And like I told you, Mr. Rahul Gandhi has asked a question. What's wrong in asking a question of the state leadership? Are we to impose our thoughts on every state leadership and go around? Is that the job of the central leadership? Is that what Mr. Modi does or Mr. Amit Shah does? That he goes and tells the state leadership, you do this, I don't listen to you. Is that how political parties ought to be run? In fact, political temperatures are soaring in poll-bound Telangana amid Rahul Gandhi's visit to the state as a war of words erupts between the TRS and the Congress. BJP chief Nadda also lashed out at K. Chandrasekhar Rao, declaring war in poll-bound Telangana. Here's the report. Political temperature is soaring in Telangana as big guns boom in the poll-bound state. Rahul Gandhi's visit to the state has triggered a massive war of words between the ruling TRS and the Congress party.
Chief Minister KCR's daughter Kavita Kalvakuntala took to Twitter and slammed Rahul Gandhi for never raising issues of Telangana in the parliament. She continued her tirade in a series of tweets. Kavita asked Rahul to learn and understand from Telangana. Congress came out all guns blazing to counter Kavita and TRS. Senior Congress leader Madhu Yashki Gaud reminded TRS that it was Congress which fought under Sonia Gandhi for Telangana statehood. We will be exposing the BJP and TRS how they have neglected farming sector and agriculture for the last many years. On all the issues, point by point, we are going to once again say how they have cheated the farmers of India and here more specifically farmers of Telangana. The Twitter war, however, ended up in netas blocking each other. The social media showdown was preceded by this drug dig by the TRS at Rahul Gandhi. The Congress MP mocked by the TRS over his nightclub video. But it is not just a war between TRS and Congress party. BJP Chief Nadda kicked off the party's Telangana campaign at a rally on Thursday. जनता अब चल पड़ी है आपके साथ। जनता ने तय कर लिया है कि वह यहां परिवर्तन चाहती है। वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहती है और वो मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार तेलंगाना को आगे ले जाने वाली है। They just came, delivered speeches and left back to Delhi. So, people of Telangana and people of Mehboob particularly understand that Bharatiya Janata Party wants votes, but they do not want to give a single penny for the water irrigation projects, which were the promises of Bharatiya Janata Party. While BJP and Congress hope to raise stakes in Telangana, the state of war has well and truly begun. With Supriya Bharadwaj in Hyderabad, Bureau Report, India Today. A team led by a court commissioner took a survey and videographed the premises of Varanasi's Gyanvapi Mosque in accordance with the court order. The team was greeted by religiously charged sloganeering from both communities amid high voltage drama. Here's more. High voltage drama unfolded outside Varanasi's Kashi Vishwanath Gyanvapi Mosque complex on Friday. Thing which looks like a war of slogans ensued between Hindus and Muslims as a court-appointed team arrived to carry out inspection and videography of the Ma Shringar Gauri Sthal. So just after the namaz, a lot of people gathered outside the premises of Kashi Vishwanath and Gyanvapi complex. As you are seeing the visuals out there, a lot of people are there and UP police trying to, in a way, convince them to not gather at this particular place because it is just few minutes when the team of Advocate Commissioner will arrive for the survey in the Gyanvapi Mosque. And you are seeing the visuals out here, how UP police and some members of Muslim community as well trying to convince them, trying to send them back to their homes. Advocate Ajay Kumar and his team are conducting the survey ordered by the court over 2 days. सर अभी क्या प्लान होगा एक्शन? बस जा रहे हैं, कमीशन की कार्रवाई हो रही है। कितनी देर चलना है काम ये? 2 घंटे चलेगा। 2 घंटे चलेगा। Videography of the complex was ordered by a local court after 2 women in 2021 filed a plea seeking permission to pray daily at the Shringar Gauri. The statue of Goddess Shringar Gauri is located at the outer wall of the Gyanvapi Mosque. A petition filed in 1991 by local priests demanding the right to pray in the mosque area is also pending. While there is speculation that Kashi could become the next rallying point after Ayodhya, the BJP so far has been silent on the issue. कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेन्ड केस है उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए।
Security forces have been deployed in large numbers to prevent any untoward incident. With Samad Shrivastava from Lucknow, Bureau Report, India Today. And that's a wrap on this bulletin. For all the latest news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app. Thanks for watching.